told your friend you're not okay. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मी एंड ही ब्लॉग्स. सो गाइज, आज जो हम जा रहे हैं, सो दिस ब्लॉग राइट इट्स कम्प्लीटली अबाउट श्रीराम ग्रीन फील्ड विच इज लोकेटेड नियर बुडिगेरे. ओके, सो द थिंग वाज कि as per the initial promise by the builder, okay, so this green field phase 2 that was supposed to be ready by March 2023. Okay, सो हमने भी वैसा ही कुछ प्लान किया था. सम वी हैव सम रिलेटिव्स हु हैव बुक द फ्लैट इन दैट. सो हमने वो प्लान किया था कि मार्च 2023 तक रेडी हो जाएगा. देन विल थिंक आफ्टर दैट कि कि बच्चों का स्कूल चेंज होता है, अभी सेशन चेंज होता है, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड आल्सो शिफ्टिंग एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ्स. But recently we got an update that it won't be ready by March 2023, and they are asking extension of 3 more months. Okay, so iske chalte there are a lot of things that are going to be disturbed because there is a session change. Okay, so we thought of the way they are like extending the dates, we thought of एक बार चल के हम लोग देख के आते हैं कि वाकई में क्या अपडेट है, वेदर दे विल बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन नेक्स्ट 3 months और नॉट. ओके, सो डेट अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान. ओके, बिकॉज ऐसे डेट एक्सटेंड होते रहते हैं तो देर आर मेनी थिंग्स विच गेट्स इम्पैक्टेड आवर प्लान्स. ओके, सो आज के वीडियो इसी के बारे में है. वी आर गोइंग टू वाइट फील्ड ग्रीन द श्रीराम ग्रीन फील्ड. ओके, फेज 2 का अपडेट्स लेने की व्हाट्स द प्रोग्रेस सो फार. So today's video is all about that. Okay, and one more thing I'd like to request you guys. Okay, so हम ऐसे प्रॉपर्टीज के वीडियो आप देखते रहते हैं, हम लोग बनाते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं. So if you are new to the channel, please subscribe to the channel. Okay, and stay tuned for the update status of Shriram Greenfield Phase 2. So let's go. So guys, अभी हम जा रहे हैं ग्रीनफील्ड. So Shriram Greenfield. So this is phase 1 and this side is the clubhouse. So phase 1 तो it was delivered long back. Okay, so phase 1 से होके phase 2 में चलते हैं. This is phase 2. So I don't know कि मई तक या जून तक कैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. So I have a little doubt. So अभी दूर से देखने में तो कंस्ट्रक्शंस उधर के जो लास्ट वाले 2-3 टावर हैं उसके कंस्ट्रक्शंस तो पूरा बचा हुआ ही लग रहा है. और फिर फ्लोर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं. सो अगर आप देखोगे उस साइड में अभी भी आई थिंक 2-3 फ्लोर बचे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बट आई एम नॉट श्योर. एंड देन ये सराउंडिंग में ये सब पार्क बनाना एंड देन ड्राइव वे बनाना, लॉट ऑफ वर्क्स आर देयर. So I am little doubtful कि even if after from seeing from here I felt like it's not about 3 months, they might take 6 months also. And so among that, one of the towers that is ready, not completely ready but most of the things are done kind of. Okay, and उधर वाले तो अभी construction हो ही रहे हैं. So अभी तो so initially what I decided was so I think this tower is J which is ready. So initially what I decided was कि चल के उधर जो टावर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो देखते हैं कि what's the progress. Okay, maybe like from inside they have prepared all the rooms and all those things, and वो सारे चीज़ें शायद हो गए हों. बाहर से देखने में ऐसा लग रहा हो. एंड देन ये मिरर विंडोज़ वगैरह का भी काम कुछ भी नहीं हो रखा है, यहाँ से देखने से तो वहीं लग रहा है. लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर सेइंग दिस. सो गाइज, अभी सिंस कि जे टावर रेडी है, सो मैंने सोचा कि चल के उसके अंदर जाके एक बार देखते हैं कि ओवरऑल फ्लैट का लुक कैसा है. सो दिस इज़ द एंट्री फॉर द जे टावर. ओके, सो ये भी अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है. एंड दिस अदर टावर्स में लाइक H and G टावर्स. ओके, सो वो टावर तो अभी रेडी नहीं, तो उधर जा भी नहीं सकते हैं. सो एटलीस्ट लेट्स गो टू जे टावर एंड सी. सो गाइज, इफ़ यू वांट लाइक सो वहाँ पे एक गार्ड बैठा रहता है जे टावर में. सो यू हैव टू कंसल्ट विथ हिम टू गेट द कीज़ ऑफ द फ्लैट्स विच आर रेडी.
सो गार्ड वाज वेरी हेल्पफुल. तो उसने फ्लैट सारे खोल के द गेट खोल के दिखा देता है, लाइक यू कैन इमेजिन कि सो बिकॉज द यूनिट्स आर मोर ऑफ अ सिमिलर नो. So at least you can get a picture of it. Maybe like if you want, you can think of your about the interiors, how you are going to do. Because Shriram में ये वाले बेसिक ये ग्रीन फेज 2 में like there are multiple flats, multiple kinds of flat. Okay, so based on the utility area, kitchen का size and all those things. So basically in 2 BHK itself. Okay, तो हम थोड़ा जाके हमारा जैसा फ्लैट है उस हिसाब से हमने थोड़ा आइडिया लगाया. एंड देन नो मैप में वट एवर स्ट्रक्चर दे गिव उसमें देखना. एंड देन नो यहाँ पे जाके एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि हाउ विल बी द विंडोज़, what we can expect, the size of the living area. Okay, so this tiling walk and all. So one thing was like that जो master bedroom है उसमें जो टाइल्स का काम नहीं हो रखा है, बिकॉज दे विल गिव, दे आर प्रॉमिस्ड लाइक दे विल गिव द वुडन फिनिश. ओके, ऑन द फ्लोर्स. सो वो चीज़ें पेंडिंग है. सो दैट इज़ ऑल्सो पेंडिंग इवन इफ द बिल्डिंग इज़ रेडी, सिम्स रेडी फ्रॉम द आउटसाइड. सो ये हमने सारी चीज़ें देखे, बेडरूम का साइज़ का अंदाज़ लिया. एंड देन ओवरऑल लाइक दिस वाज कंप्लीट इमेजिनेशन काइंड ऑफ थिंग. अब अपना घर है तो थोड़ा सा इमेजिन किया कि कैसे क्या होगा. But at the end, looking at the progress, I was not completely satisfied with this. So guys, after visiting this, now I'm going back. Okay, so यही था update related to Shriram Greenfield Phase 2. So इधर से चलते हैं. So guys, I just saw the update of Shriram Greenfield Phase 2. Okay, so देख के तो I don't think मतलब मेरे को तो नहीं लगा कि they will be able to deliver this by June. So आपने भी देखा है, so you can also tell your views. Okay, and then you can comment in the comment section. Okay, कि what you feel about it. Okay, so मेरे को तो नहीं लगा, so I'm little bit disappointed about this whole thing. Okay, so we'll have to plan accordingly. So maybe like we have to plan it for 6 months. Okay, so यही था अपडेट श्रीराम के बारे में, ग्रीनफील्ड फेज 2. ओके, so I'd like to conclude this video here itself. So future में like after 2 months or 3 months I'll again give a visit and then I'll share the update with you definitely. Okay, so if you are new to the channel, please subscribe to the channel. Okay, and if you like the video, give a thumbs up. Thanks for watching. Bye.